Hello student, I am Assistant Professor Komal Wanshiv. In this video, I will explain you algorithm analysis in chapter 1 of data structure. First point is what is the algorithm analysis. As there are a different way to solve a problem and some of the solutions may be more efficient than other. There is need to compare this way or algorithm to select the best one. This process is called as the algorithm analysis. Means सिंपल आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जैसे कि आपको पुणे से बॉम्बे जाना है तो वहां पे मल्टीपल वेज हो सकते हैं जाने के लिए। एक तो आप बाइक यूज कर सकते हैं, सेकंड आप फोर व्हीलर यूज कर सकते हैं, थर्ड आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, अदरवाइज एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द मेनी वे, बट आपको क्या करना है कि इसमें से बेस्ट वन चूज करना है। तो ये बेस्ट वन आप कैसे चूज करोगे कि अवेलेबिलिटी, then availability of the resource, then second time and third cost। तो इन बेसिस से आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा वे आपको चूज करना है। वैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट वन चूज करना, इट इज कॉल्ड एज द एल्गोरिथम एनालिसिस। So generally, the performance of the algorithm depends on the following elements. First is the whether that algorithm is providing the exact solution for the problem. आपको correct solution मिल रहा है उस algorithm से. Second, whether it is easy to understand, whether it is easy to implement, and how much space it required to solve the problem, and how much time it required to solve the problem. So कितना time लग रहा है, कितना space required है, correct output मिल रहा है, understood हो रहा है, otherwise easy है implement करने के लिए। इस फैक्टर से आप डिपेंड करें सिलेक्ट करोगे कि विच एल्गोरिथम इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस। Performance analysis of an algorithm is the process of calculating space and time required by that algorithm. The performance analysis of algorithm is performed by using the following measures. First is the space complexity and second is the time complexity. Performance of the algorithm is measured through these two factors. First, space complexity means how much space is required to solve that particular problem, and time complexity means how much time is required to solve the algorithm. Next is the what is the space complexity. जैसे कि हमने डिस्कस किया, the total amount of computer memory required by an algorithm to complete its execution is called as the space complexity. मतलब आपको algorithm solve करने के लिए कितना memory space required है, तो उसको बोलते हैं space complexity. When we design an algorithm to solve a problem, it needs some computer memory to complete its execution. For any algorithm, memory is required for the following purpose. तो मेमोरी किस लिए लग सकती है? तो फर्स्ट है टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेकंड टू स्टोर द कांस्टेंट वैल्यू, थर्ड टू स्टोर द वेरिएबल वैल्यू, एंड लास्ट वन इज द फॉर few other things like function call, jumping statement, etc. So इन फैक्टर्स के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड है जब आप अल्गोरिथम एग्जीक्यूट करोगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम का कोड स्टोर करने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए, वेरिएबल स्टोर करने के लिए, एंड एज वेल एज जब फंक्शन कॉल होता है तो वहां पे कहाँ से कॉल गया है उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए, ये इसके लिए मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है। Then next is the space complexity. So in space complexity, first point is the instruction space. It is the amount of memory space used to store the compiled version of the instruction. Instruction space मतलब जो आपका कंपाइल हुआ प्रोग्राम है उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लग रहा है, so it is the instruction space. Second is the environmental stack. It is the amount of memory used to store the information of partially executed function at the time of function call. ठीक है, जब फंक्शन कॉल होगा तो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए जो मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है उसको हम एनवायरमेंटल स्टैक बोलेंगे। Then next is the data space, means it is the amount of memory space used to store all the variables and constants.
Note that when we want to perform analysis of the algorithm based on its space complexity, we consider only data space and ignore the instruction space as well as the environment space. So we consider only data space when we calculate the space complexity of the program. That means we calculate only the memory required to store the variable, constant, structure, etc. So space complexity is calculated on the on this factor, but we ignore instructions and environmental space. We consider only data space. So see the example. In this example, int square is the function which accepts one parameter of integer type, and code is the return a into a. So it required 2-byte memory to store the variable a, and another 2-byte memory is used for return value. So total 4-byte memory space is required to complete this program execution. 2-byte for store integer value and 2-byte for return value. So total 4-byte memory space is required to complete its execution. See the second example. In this example, sum is the function which accepts two parameters. One is integer type of array and second is integer variable. Then int sum is equal to 0. I is integer variable. Then for loop I is equal to 0, I less than n and I plus plus. Then sum is equal to sum plus a of I and return sum. So it requires n into 2 bytes memory to store the array variable n. Here n into 2 because n elements and every element has 2 bytes memory space. So it required n into 2 bytes memory space to store the array. 2 byte of memory for integer parameter n. 4 byte of memory for local integer variable sum and I. 2 byte for the return value. So total 2n plus 8 byte memory is required to complete its execution. ओके सो यहाँ पे देखो कि एरे में n एलिमेंट्स हो सकते हैं सो इसके लिए साइज लगेगी 2n because it is integer type of array so 2 byte for int and n elements so it required 2n memory. Then for this n variable required 2 byte. Then sum and I के लिए again 2 byte memory लगेगी and return value करने के लिए 2 byte memory. So total 2n plus 2 plus 4 plus 2 that is 2n plus 8 byte memory is required to complete its execution. Next point is the time complexity. Time complexity means how much time is required to complete the execution of the algorithm. So the time complexity of an algorithm is the total amount of time required by an algorithm to complete its execution. For example, see this example. In this example, sum is the function which accepts the two parameters and return a plus b. So it requires 1 unit of time to calculate a plus b and 1 unit of time to return the value. That means totally it takes 2 unit of time to complete its execution. मतलब यहाँ पे एक यूनिट लगेगा a plus b कैलकुलेट करने के लिए and 1 unit is required to return that value. So total 2 units are required to complete its execution. So time complexity of this program is 2 units. See the second example. Sum of list is the function which accepts the two parameters. One is the integer type of array and second is the simple integer variable. Then two local variable sum and I. Then for loop I is equal to 0, I less than n and I plus plus. Then sum is equal to sum plus a of I and return sum. So here cost cost time required for line unit, repetition number of times repeated and total time.
सो यहाँ पे देखो कि ये स्टेटमेंट, इसके लिए टाइम लगेगा 1 यूनिट। ओके, रिपीटेड नहीं हो रहा है, सो वन यूनिट ही। ओके, वन टाइम ओनली रिपीट हो रहा है, एंड टोटल टाइम कितना लगेगा 1। देन यहाँ पे 1 + 1 + 1 मतलब फॉर आई इज इक्वल टू 0, इसके लिए 1 यूनिट, आई लेस देन n 1 एंड आई प्लस प्लस, सो 1 + 1 + 1। देन हियर I इज इक्वल टू 0, ये वन टाइम होगा, तो यहाँ पे 1। देन I इज लेस देन n, ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n+1 टाइम, मतलब जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक, सो n+1 टाइम। एंड I प्लस प्लस, ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स। सो टोटल टाइम इज रिक्वायर्ड 2n+2। देन हियर सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ I, तो यहाँ पे कितना टाइम कॉस्ट लगेगी, 2। ये कितने टाइम्स स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, ठीक है, क्योंकि n टाइम्स जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन n टाइम हो रहा है, so total time is required 2n। then return sum। okay, so यहाँ पे only one cost, repetition only one time हो रहा है, so total 1। so addition of this is 4n plus 4, means total time is required 4n plus 4। so here the exact time is not fixed and it change based on the n values। ठीक है, n पे डिपेंड होता है कि कितना टाइम्स रिक्वायर्ड है। okay, so it completely depend on n value। if we increase the n value, then the time required also increase linearly। totally it takes 4n plus 4 unit of time to complete its execution, and it is a linear time complexity। Next point is the asymptotic notation। Asymptotic notation of an algorithm is a mathematical representation of its complexity। So it is the mathematical representation of the time complexity, where we use three types of asymptotic notation। First one is the big O notation, second is the big omega notation, third is the big theta notation। Usually, the time required by an algorithm falls under three types. First is the best case, second is the average case, and third is the worst case। Best case means minimum time required for program execution. Average means average time required for program execution. And worst case means maximum time required for the program execution। See the example. In this array, there are total 7 elements। So suppose we want to search 25 value। So 25 हमें second position पे ही मिल रहा है। So it is the best case time complexity। Then second, suppose अगर मुझे 6 सर्च करना है, तो यहाँ पे 6 मुझे एवरेज टाइम पे मिल रहा है। ओके, सो इट इज द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर मुझे 5 सर्च करना है तो मुझे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो इट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो बेस्ट केस रिक्वायर मिनिमम टाइम, average case required average time, and worst case required maximum time। Then first notation is the big O notation। Big O notation is used to define the upper bound of an algorithm in terms of time complexity। That means big O notation always indicates the maximum time required by an algorithm for all input values। That means big O notation describes the worst case of an algorithm time complexity। बिग ओ नोटेशन ये कब यूज होगा कि जब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मतलब वर्स्ट केस में जा रहा है आपका प्रोग्राम, तो वहां पे बिग ओ नोटेशन यूज होगा। सेकेंड नोटेशन इज द बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन इज यूज टू डिफाइन द एवरेज बाउंड of an algorithm in terms of time complexity। That means big theta notations always indicate the average time required by an algorithm for all input values। That means big theta notation describes the average case of an algorithm time complexity। So बिग थीटा नोटेशन आपको कब यूज करना है कि जब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए एवरेज टाइम रिक्वायर्ड है। ओके,
So it indicates the average case time complexity. Next is the big omega notation. Big omega notation is used to define the lower bound of an algorithm in terms of time complexity. That means big omega notation always indicates the minimum time required by an algorithm for all input values. That means big omega notation describes the best case of an algorithm time complexity. मतलब बिग ओमेगा नोटेशन आप कब यूज कर सकते हैं कि जब आपको एक अल्गोरिदम एग्जीक्यूट करने में मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है. इट इंडिकेट द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Thank you. So in this video, we see the algorithm analysis